जा सकती हैं। कैसम असलम साहब हमारे साथ रहिए। हमें आयज़ा इरफान नुमाइंदा समा ने यूएस से ज्वाइन किया है। आयज़ा बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आयज़ा एक बड़ी ट्रेड डील की यहाँ पर खबर सामने आई है, एक बड़ी खबर सामने आई है, आपके पास क्या डिटेल्स हैं इसकी, शेयर कीजिएगा पहले। जी, ये ट्रूथ सोशल पे सदर ट्रंप ने एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने इस एक ट्रेड पैक्ट जो पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान हुआ है उसके मुकम्मल होने का में लिखा है, और उन्होंने लिखा है कि वो एक वसी ऑयल रिजर्व बनाने जा रहे हैं दोनों मुल्क, और पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है। और पाकिस्तान के जो गुज़िश्ता दिनों जो पाकिस्तान की तरफ से दौरे जारी थे, हमारे एफएम और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी यहाँ पे थे, उन्होंने भी इंडिया दिया था अपनी मुलाकातों के बाद के कुछ तजारती मुआहदों पे बात हो रही है। तो ये लगता है उस सिलसिले का पहला फॉलोअप है, पहली कड़ी है, एक पहली डील जो है दोनों मुल्कों के दरमियान हो गई है। और उसमें एक दिलचस्प बात जो इंडिया के हवाले से उन्होंने सदर ट्रंप ने हस्बे आदत या अपने कह दी कि हम हो सकता है एक दिन इंडिया को भी ये दोनों ममालिक मिलके तेल फरोख्त कर रहे हों, जो कि पाकिस्तान और इस वक्त अमेरिका के ताल्लुकात की मजबूती को जाहिर करता है, और एक बड़ी अच्छी डील है जो पाकिस्तान के लिए इकोनॉमिक हवालों से भी बहुत बेहतर होगी। जो ट्रेड इम्बैलेंसेस जिसकी बेहतर करने के लिए पाकिस्तान बहुत अच्छे से कोशिश कर रहा है, उसके लिए बहुत एक अच्छा खुशाइंद इम्कानात पैदा होते हैं इसके बाद। तो फिलहाल यही है, और एक कंपनी की तलाश है सदर ट्रंप के इस बयान के मुताबिक जो कि इस पूरे मुआहदे को आगे ले जा सके। आयज़ा, एक अहम मुलाकात भी हुई थी फाइनेंस मिनिस्टर की वाशिंगटन में, और बायलैटरल ट्रेड टॉक्स भी चल रही थी। मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड भी बताइएगा, ये ट्रेड टॉक्स कब से जारी थी? देखिए, सदर ट्रंप की जो टैरिफ के ऐलान थे उसके बाद से बहुत से ममालिक की सदर ट्रंप की इंतजामिया के साथ मुख्तलिफ बातचीत चल रही थी कि टैरिफ को कम किया जाए, और उसमें जाहिर है उन टैरिफ के को कम करने के एवज अमेरिका मुख्तलिफ किस्म के ट्रेड एग्रीमेंट करता हुआ नजर आ रहा था। सदर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की सारदार साहब की एक अहम मुलाकात जो हुई वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ हुई, मार्को रूबियो के साथ, बल्कि अपने आखिरी विजिट पे उन्होंने जो पाकिस्तानी प्रेस के नुमाइंदों से गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आने से पहले उनकी एक दो दफा फोन पे भी उनसे दोबारा बात हुई, और एक ट्रेड एग्रीमेंट का जो गालिबन शायद यही हो, क्योंकि उन्होंने कहा कि एक ट्रेड डील हमारी फाइनल हो रही है। तो ये सारी बातचीत शायद उस टैरिफ के ऐलान के बाद से मुख्तलिफ मामलों के साथ जो चल रही थी उसमें पाकिस्तान भी जाहिर है शामिल था, और पाकिस्तान की भी यही कोशिश थी कि अमेरिका में जो अपने ट्रेड जो है उसको इम्प्रूव किया जाए और टैरिफ जो है वो कम से कम पाकिस्तान पे लागू हों। तो शायद ये उसी सारी गुफ्तगू का एक रिजल्ट है जो हमें नजर आ रहा है। बिल्कुल उसका रिजल्ट है जो इस वक्त हमें नज़र आ रहा है। और जब हम आयज़ा बात कर रहे हैं इस पूरी डील की, तो ख़ास तौर पे जैसे कि आपने जिक्र भी किया, भारत की बात भी उनकी जानिब से की गई है इसमें। ट्रूथ सोशल पे जिन्होंने पैगाम दिया है कि पाकिस्तान अपना तेल भारत को भी बरामद करेगा आने वाले वक्त में। तो भारत के वाले से भी कुछ खबरें जो सामने आई वो बहुत अच्छी नहीं थी। 25% टैरिफ उन्होंने आयद करने का ऐलान किया, फिर इजाफी जुर्माना आयद करने का भी ऐलान किया था। तो भारत को भी सख्त तनकीद का निशाना बनाते रहे मुसलसल। जी, भारत के साथ असल में सदर ट्रंप जो है वो हर कुछ देर बाद, हर कुछ दिनों बाद इस चीज का क्रेडिट लेना नहीं भूलते कि उन्होंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो हालिया तनाज़ा था उसको हल करने में मदद की। जबकि अभी आप कल या परसों की बात है कि भारतीय पार्लियामेंट में भी भारतीय हुकूमत की तरफ से कहा गया कि कोई फॉरेन गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं थी। मतलब भारत मुसलसल सदर ट्रंप के इस स्टेटमेंट को रिजेक्ट करता हुआ आ रहा है, जो कि डेफिनेटली किसी भी अमेरिका के सदर के लिए बिल्कुल ये अच्छी बात नहीं उसको महसूस होगी। तो जाहिर है एक सर्द महरी सी ताल्लुकात में महसूस होती जा रही है, और शायद अब ज्यों दिन गुजरते जा रहे हैं और मजीद स्टेटमेंट सामने आती जा रही हैं, शायद भारत अपनी वो पोजीशन अमेरिकी ऐवानों में लूज करता जा रहा है जो हमने देखा कि सदर बाइडेन के दिनों में हमें यहाँ पे नजर आई, जहाँ पे उनको सदारती मेहमान के तौर पे भी मोदी को बुलाया गया। तो वो सारी चीजें अब शायद नहीं होंगी, और मे बी पाकिस्तान is in a better position in American government side. बिल्कुल। कैस असलम साहब ये हमारे साथ मौजूद हैं। कैस साहब, जब हम ऑयल कंपनी की इस डील की, ट्रेड डील की बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे इस पर भी कमेंट चाहता हूं कि क्या ये एक बराबरी की बुनियाद पर मुआहदा होगा कि ऑयल कंपनी का जो इंतखाब किया जा रहा है उसका पाकिस्तान में किस हद तक इख्तियार होगा? देखें, हमने जो मुआहदा रेकविक में वो सोने की कान के साथ किया है वो बराबरी पे किया।
वहाँ हमने ये कहा कि जो प्रॉफिट होगा वो 50-50 होगा, और हमारी जो मजदूर काम करेंगे उनको इंटरनेशनल लेवल पे सेफ्टी और उजरत मिलेगी, और वो जो हम पाकिस्तान का हिस्सा है उसका 50%, दैट मीन्स 25% ऑफ द टोटल प्रॉफिट्स बलूचिस्तान गवर्नमेंट को जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को ये बात समझ आ गई हुई है कि अगर हम औने पौने पैसों पे अपने रिसोर्सेज नहीं बेच सकते, तो मेरा ख्याल है कि हमने बड़ी अक्लमंदी से किया होगा कि हमारे रिसोर्सेज हैं, उनकी टेक्नोलॉजी है, इन्वेस्टमेंट है, हमारे लोग भी शायद इन्वेस्टमेंट करें, तो आई थिंक ये कहीं ना कहीं उतना ही उसी तरह का ही होगा। मुझे एग्जैक्टली डॉक्यूमेंट्स तो नहीं पता, वो जब तक आएंगे नहीं, बट आई थिंक ये एक इक्वल बेसिस पे ही होगा। और जो बड़ी बात है वो इम्पोर्टेंट ये है कि जिस इलाके से तेल निकलेगा उस इलाके की डेवलपमेंट पे खर्च करना बहुत जरूरी है, जिसमें हमने रेटोरिक पे ये फैसला किया था। आई थिंक हमें अब समझ आ गई है हमारे नेगोशिएटर्स को कि जब तक इसके मराते और फायदे हमारे लोगों को, हमारे इलाके के लोगों को नहीं मिलते, फिर तो वो लूटमारी होती है, जिस तरह अफ्रीका में करते रहे हैं यूरोपियंस और अमेरिका। अब ऐसे नहीं होगा। तो फिर पाकिस्तानी मईशत को फिर इस डील से किस हद तक फायदा होगा? अगर हम बात करें इस एतबार से, रोजगार की बात करें, ज़र मुबादला की बात करें, सनती तरक्की की बात करें, कैस साहब? देखें, चीजें एक दिन में तो हल नहीं होती। पहले वो तेल ढूंढा जाएगा, फिर शायद सैटेलाइट से पता हो किस जगह है, फिर वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है, फिर वो तो कुछ साल लगते हैं। मगर जब आपकी वर्क फोर्स वहाँ इस्तेमाल होती है, जब आप वहाँ से तेल जो है उसको रिफाइनरीज तक पहुँचाते हैं, तो उसमें एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है। मैंने आपसे अर्ज की कि पहली बात ट्रांसपेरेंसी है, दूसरी बात आपकी यूथ को स्किल्स देना है, और तीसरी बात जो है एम्प्लॉयमेंट। तो मेरा ख्याल है, बता रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ तिजारती डील अब मुकम्मल हो गई है। अमेरिका की जानिब से इसका ऐलान भी किया गया है सदर ट्रम्प की जानिब से। But we sort of look forward to every day because we have a lot of surprises, most of which are good. Today you saw GDP was much higher than anticipated. And Scott, good job. Scott Bessent's been working, just got back from a little excursion and a meeting with China in Europe. And that went well. We've done very well with the EU deal. It's a very big deal, I guess. They say the biggest trade deal ever made by far, probably is. Just completed Japan and many other countries, and hundreds of billions of dollars is flowing into our country. We've never seen anything even close. And that's not me saying it, that's everybody saying it. And it's going to be something really, really very special. Maybe even more importantly, factories for AI and for cars and for lots of other things are being built in this country or planned to be built very shortly. They'll be starting. And where they need great amounts of energy, like for AI, they're going to be, I've given them approval. And Lee Zeldin has given them very fast approval to build their own electric powering, and they'll build them with the factory, so we don't have to worry about an ancient grid and all of the other problems, the obstacles people thought we were going to have that would make it impossible. And we're leading AI by a lot, and I think people are very impressed with our country. As they said, the King of Saudi Arabia and various leaders, and just about every leader I can even imagine, were in the Middle East and Qatar, UAE, Saudi Arabia. They said, 1 year ago, your country was dead, and today you have the hottest country anywhere in the world, and that's true. So I congratulate everybody in the room that's helped, but we're doing a good job together. I'd like to begin by saying a few words about the unbelievable kind of numbers that we've been putting up. And as I said, the number of 3%, the pace
In the second quarter, we smashed all expectations. They thought it would be maybe a little bit less than 2, and it was 3, a little bit more than 3. Consumer spending is up. Business investment is way up. Domestic manufacturing is way up. Real disposable family income is up, and personal savings are up. Other than that, we're not doing so great. We have the hottest country, and I'll tell you, it's a great. We're having a lot of fun with it. At the same time, we dramatically slashed government spending for the second quarter in a row, down nearly 4%, which people were surprised at. We do a lot of cutting also. The private sector has boomed with nearly 600,000 jobs added, way above expectations, while we have reduced the federal workforce by 70,000 jobs. So these are private jobs that are coming back to our country. Federal jobs are being cut. Critics said that our tariffs would hurt the economy, but the data shows the exact opposite, and the exact opposite is happening. The U.S. Treasury has taken in $150 billion from tariffs, and we'll be adding about $200 billion next month, for totals that nobody's ever seen before, frankly. And foreign imports were down 30% in the second quarter, while the domestic auto production surged by a stunning 36%. How about that number, Dr. Oz? Right? That's good. That's good. We want to do that with your patients, too. We'll have a very healthy, we're going to have a very healthy country. At the same time, inflation continues to fall faster than expectations, and for the 5th consecutive month, core inflation was lower than predicted substantially. This is truly the dawn of the golden age of America. That's what we're in. We want to keep it that way. This afternoon, we're gathered to announce another historic victory for the American people, a very important one. Today, the dream of easily transportable electronic medical records finally becomes a reality. I want to thank Secretary Scott Bessent, Robert F. Kennedy Jr. for joining us, as well as Administrator of the Centers for Medicine and Medicaid Services, Dr. Mehmet Oz, all friends of mine, White House AI and crypto czar David Sachs, and Acting Administrator of DOJ, Amy Gleason, all here. And we have various great senators here, Senator Round, Senator Cassidy, thank you very much for being here and helping out. I also want to thank representatives from Apple, Google, Samsung, Amazon, OpenAI, Anthropic, Epic, Oracle, Athena, Health, Noom, and that's not a bad group of people. Wow. And they're the top people. We don't play games. You know, when you invite people to the White House, the top ones, that's a big net worth sitting in this room right now. Boy, oh boy, we better make sure the room is nice and safe. It's half the net worth of our country. I'm also grateful to be joined by numerous congressmen. I'm not going to name you if you don't mind. I'll probably never get their vote again, but it's too many. Thank you very much for being here. The Congress has been great. Senators have been great, and the congressmen and women have been great. We just passed most important, I think. Look, I can't say most important, but certainly one of the most, but the most consequential and the largest bill in the history of Congress. And I call it the great, big, beautiful bill. We call it different names, but it all means the same thing. For decades, America's healthcare networks have been overdue for a high-tech upgrade, and that's what we're doing. The existing systems are often slow, costly, and incompatible with one another. But with today's announcement, we take a major step to bring healthcare into the digital age, something that is absolutely vital. You got to do it. Moving from clipboards and fax machines into a new era of convenience, profitability, and speed, and frankly, better health for people. Under the leadership of Administrator Oz, we're officially launching the CMS Digital Health Tech ecosystem to give healthcare providers, insurers, and software companies the tools they need to empower Americans with a 21st century experience on health.
The key breakthrough we've made is getting many of the biggest names in the healthcare and technology to agree to industry-wide standards for electronic medical records. All of those great companies that you just heard have gotten together with this group of very brilliant people. I don't know who's more brilliant, them or them. I don't know. Could be them. I hate to tell you. It could very well be them. But I don't know. I'm going to take my team. But the key breakthrough we've made is getting many of the biggest names in healthcare and technology to agree to that those standards of electronic medical records that we talk about and you've heard about for so many years, and now it's happening. This will allow patients to easily transmit information from one doctor to another, even if they're different networks and using different record-keeping systems. No matter what system they use, they're all transferable.